Good morning, dear students. Open page number 174 of your book, last poem, poem 5, The Road Not Taken. About this is written by Robert Frost. Robert Frost, the famous American poet, was born on 26th March 1874 in San Francisco. He attended several schools but never got a degree, though 16 honorary degrees were conferred on him in subsequent years. He was in turns a teacher, a cobbler, an editor, and finally a farmer for 11 years. He received many academic awards of world fame and in the end was made America's national poet. He died on 29 January 1963. Okay. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could. To where it bent in the undergrowth matlab the bushes and the trees, then took the another as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and has made all the difference. I'm explaining you the poem. One day, as the poet is traveling alone, एक दिन poet जो था वो अकेला travel कर रहा था. He comes across a fork in the road. Fork समझते हैं आप? आपने देखा है कि fork जो होता है वो आगे से fork जो होता है, road जो होती है वो दो में diverge हो जाती है, divide हो जाती है. एज द रोड डाइवर्जेस मतलब होता है वैन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, दो अलग डायरेक्शन में बढ़ जाती है. ही स्टैंड्स एंड कंटेम्पलेट्स विच पाथ टू टेक. देखो आप पिक्चर में देखो कि स्टैंडिंग एंड ही इज डिसाइडिंग कि मैं दोनों में से दो रास्ते जा रहे हैं, मैं कौन से रास्ते पे जाऊं. विच पाथ टू टेक, ही कैन चूज ओनली वन. दो पे तो वो एक साथ नहीं चल सकता, ही हैज़ टू गो मूव ऑन वन पाथ ओनली. सो ही डिसाइड्स टू टेक द पाथ विच इज़ लेस वॉर्न आउट. तो वो डिसाइड करता है मैं ऐसे पाथ पे या रास्ते पे जाऊं जिस पे लोग कम गए हों, एंड लीव द अदर पाथ फॉर अनदर डे. और दूसरा रास्ता मैं छोड़ देता हूँ, किसी और दिन मैं उस रास्ते पे चला जाऊँगा. ही रियलाइजेज ही मे नॉट बी एबल टू कम बैक. और उसको लगता है अगर एक बार मैं इस रास्ते पे चला गया तो हो सकता है मैं उस दूसरे रास्ते पे जाने के लिए वापस लौट कर ना आऊँ. बट ही कंसोल्स हिमसेल्फ बाय थिंकिंग ही विल कम टू द अदर पाथ लेटर. लेकिन वो अपने आप को सिर्फ कंसोल कर रहा है, तसल्ली दे रहा है कि नहीं, मैं किसी दिन इस बात पर लौट के ज़रूर आऊँगा. आफ्टर मैनी ईयर्स ही लुक बैक एट हिज चॉइस ऑफ फॉलोइंग द पाथ लेस ट्रेवल बाय. बहुत सालों के बाद वो वापस मुड़ के देखता है तो देखता है कि वो जो उसने रास्ता लिया था विच वॉज लेस ट्रेवल बाय, एंड रियलाइजेज दैट द चॉइस मेड ऑल द डिफरेंसेस इन हिज लाइफ. और उससे उसकी लाइफ में बहुत डिफरेंस आ गया. इट हैज़ मेड and realizes the choice whether the poet is happy about his choice or regrets it is left ambiguous as he sighs. उसमें नहीं मालूम पड़ रहा है कि whether he is happy or he regrets. Whenever it is a sigh of relief or regret is for the readers to decide. I mean, that the readers only have to decide. The title, The Road Not Taken, is absolutely appropriate. The poem does not talk merely about the choice which the poet made, but also about how difficult the choice was and the pros and cons which the poet took into consideration while making the choice. जब हम अगर थीम की बात करते हैं तो ये पोएम हमें बताती है अबाउट द चॉइसेस दैन वन मेक्स इन लाइफ. हम जो सिलेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में. इट टेल्स अबाउट अ मैन हु कम्स अक्रॉस अ फॉग इन द ही फील्स सॉरी दैट ही कैन नॉट ट्रैवल. कई बार क्या होता है, हम दोनों, हमें कोई रास्ता मिलता है, हम दोनों पे एक साथ नहीं जा सकते. वी हैव टू डिसाइड ओनली वन पाथ. And Frost uses this fork in the road to represent a point in man's life where he has to choose the direction he wishes to take in life.
As he thinks about his decision, he looks down on one path as far as he can see, trying to foresee what life will be like if he walks the path. He concludes that the trail that has been less traveled on would be more rewarding when he reaches the end of it. So, or the poet feels sorry about because he could not travel on both the roads, or as a one person he could not travel on both the roads. He stood there all alone facing a dilemma. The road went in the deep woods and the poet could not see where the beginning was visible, the end was not. तो हम कई बार जब रास्ते सिलेक्ट करते हैं, द चॉइस कुड बी मेड बट इट्स रिजल्ट वॉज अननोन. हमें नहीं पता चलता कि जो हमने सिलेक्ट किया है वो सही होगा या गलत. So read the poem. If there is any problem, you can contact me. Thank you.